सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे आप लोग? तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं द स्मार्टफोन बाइंग गाइड्स 2026 टू 27 एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू बाय द स्मार्टफोन फॉर लेटेस्ट जनरेशंस। और स्मार्टफोन लेने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें से आपको देखना चाहिए गाइस, और सब कुछ आप इस वीडियो में बताएंगे। और देखते रहिए वीडियो एंड तक। और चैनल को नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्मार्टफोन लेने से पहले आपको 6 इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं बता दूंगा गाइस। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया से आप क्या को देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए फोन में लेने से पहले, तो सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहला थिंग आपको देखना चाहिए कि फोन की ड्यूरेबिलिटी क्या है गाइस। तो ड्यूरेबिलिटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोन की ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करें तो फोन की ड्यूरेबिलिटी मिनिमम हार्ड डिस्क के बाद आपको होना चाहिए। तो प्रीमियम एल्यूमिनियम बिल्ड होगा तो ज्यादा सुपर बेटर बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाएगा। प्लास्टिक होगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इफ इट इज फॉल डाउन देन इट विल ब्रोक द मोबाइल, or it's something damage heavily cost you to repair the mobile. So it is very bad effect to your mobile for buying the high end smartphones or low level smartphones. So definitely you will have to look about the durability of the mobile when you will buy the smartphone. First thing आपको पता चल गया है, so durability is number one. जो first thing तो हो गई guys. So second thing it is performance. What is the performance you are getting in this phone? So which you are getting the high level smartphone. So you will get a Snapdragon 8 Gen processors or Dimensity 8000 processor you are getting in. सो सेकंड थिंग इज परफॉर्मेंस गए। तो परफॉर्मेंस के साथ आपको कौन सा प्रोसेसर मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा है, तो आपका बजट क्या है, बजट के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेसर होना चाहिए गाइस। तो डेफिनेटली आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन का प्रोसेसर और मोर लेवल का प्रोसेसर होना चाहिए डेफिनेटली। सो लेटेस्ट 10 के अकॉर्डिंग तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर से नीचे प्रोसेसर वो डेफिनेटली इट इज डिसेंट प्रोसेसर। बट इफ यू आर गेटिंग द स्नैपड्रैगन हाई लेवल प्रोसेसर सो डेफिनेटली इट इज सुपर गुड। सो डायमेंसिटी में आपको होना चाहिए, डायमेंसिटी 8000 के ऊपर प्रोसेसर होना चाहिए गाइस। सो उसके नीचे तो जरूर कंसिडर मत कीजिए। सो कंसिडर विट इज हाई लेवल with the Dimensity 8000 processor। and जो स्टोरेज आपको मिल रही है USB 4.1 और 3 से हाई होना चाहिए डायरेक्टली। द स्टोरेज इज वेरी आल्सो इंपॉर्टेंट विद द कमिंग प्रोसेसर्स। एंड डेफिनेटली द परफॉर्मेंस विद सुपर कूलिंग सिस्टम मिल गया है तो भी बहुत ज्यादा अच्छा है गाइस। सो डेफिनेटली आप इन चीज को जरूर कंसिडर कीजिए व्हेन यू आर बाइंग द स्मार्टफोन फॉर योर 2026 and 27। so third thing you have to consider what is display guys। So display is very important when you will visual outdoor and indoor। definitely the display is very important। जो भी display आपको मिल रहा है guys तो वो AMOLED होना चाहिए definitely according to budget। so budget according आपको AMOLED display मिल रहा है। IPS display you will not consider for the budget end of 2026 and 2027 trend। so definitely you will have to be high level budget। so definitely you have to be consider the AMOLED display with high refresh rate। so 120 it is very good guys। 120 plus it is superb। so definitely you have to consider the display with super AMOLED with high refresh rate। so definitely this is third point। and the fourth point is definitely battery backup and super fast charging। so definitely battery backup is super। तो सिलिकॉन की बैटरी आपको मिल जाती है। so definitely it is super according to your budget। so बैटरी में भी आपको 5000 और 6000 मोर बैटरी है तो सुपर फैंटास्टिक बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली हाई लेवल की चार्जिंग को भी कंसीडर कीजिए। डेफिनेटली फास्ट चार्जिंग है तो आपको फास्ट भी चार्जिंग होगा। और डेफिनेटली अगर बैटरी बैकअप और बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है तो लॉन्ग लास्टिंग आपको यूज में हेल्प करेगी। सो डेफिनेटली हाई लेवल बैटरी को कंसीडर कीजिए। सिलिकॉन की बैटरी है तो डेफिनेटली ज्यादा कंसीडर कीजिए गाइस व्हेन सिलिकॉन इज डेफिनेटली हाई लेवल battery। and fifth point is RAM and storage you have to consider guys। so what about RAM and storage? what is the type of RAMs and how the RAMs you are getting, LPDDR5X or LPDDR4X? so definitely you have to consider the more। so definitely it is the storage type and so definitely speed of the phone। so definitely you will just so आपको फोन में क्या क्या स्पीड देखने को मिल रहा है, तो स्पीड क्या है, so how much the speed you are getting for the RAM storage when the background application is closed, the background application is running or not, definitely it is considered according to your RAM। according to your budget you will get have to be 8GB plus or 1612GB USD is very good। and definitely you have to consider the USB 3.1 or 3.4 or 4.2 exactly the more storage of RAMs and it is more good for your future generation। and definitely it is your users types and professional works also। so definitely it is super good। and fifth one जो होने वाला है, we are getting the 5G bands in the mobile। so 5G तो compulsory होना ही चाहिए guys। so definitely 4G phones are not able consider in this budget smartphones according to the 2026 and 27 trend। so definitely you have to consider। तो इंडिया में तो 5G bands और N77 and N78 so main bands है 5G से। but definitely you have to consider more 5G bands which support to the smartphones and 5G it is super important for your
एडवांस जनरेशन, सारी चीजें आपको कंसिडर करना है गाइस। तो 6 1 है जो आपको प्राइस, जो व्हाट इज द प्राइस यू हैव टू कंसिडर फॉर योर मोबाइल फोन फॉर योर buying 2026 and 27. So definitely you have to consider the price, what is the price you are getting for your, according to the features of the smartphone, and definitely you will look a budgeted smartphones, friendly smartphones through your smartphone guides, and definitely the features are more important, and then your price according to your buying the smartphone. जो price होने वाला है guys, तो definitely उसके accordingly आपको feature देखना है और definitely इसको buy करना है guys। तो ये सारे 6 चीजेस आपको कंसिडर करना है गाइस। तो डेफिनेटली इन चीजों के अकॉर्डिंग आपको प्राइस डिसाइड करना है, और प्राइस को भी आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आर, यू आर गोइंग टू ऑफलाइन एंड यू हैव टू चेक द प्राइस, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल ऑनलाइन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन। Thank you for watching, and if you are new to channel then subscribe to channel for latest tech updates and tech videos. So thank you.